Whereas Jan Suraj Party leader Prashant Kishore and some other people who are illegally protesting in front of the Gandhi statue in the restricted area of Gandhi Maidan, Patna, for their 5-point demands have been arrested. This is what we're learning. In fact, the administration had issued a notice to move from there to the designated place, Gardani Bagh, for the protests. An FIR was lodged at the Gandhi Maidan police station for illegally protesting in the restricted area. Even after repeated requests and giving sufficient time, the place was not vacated. Today, he has been detained along with some other supporters earlier in the day. They are completely healthy. They will be presented before the court as per the prescribed procedure. This is what we've learned from the Patna DM, Dr. Chandrasekhar Singh. Whereas on the BPSC Rao, we've learned that Jan Suraj Party leader Prashant Kishore and some other people who are illegally protesting in front of the Gandhi statue in the restricted area of Gandhi Maidan have been arrested. This is what we've learned from our sources. In fact, the administration had issued a notice to move from there to the designated place, that was Gardani Bagh, for the protest. An FIR now has been lodged at the protesting in the restricted area. We have a reaction coming in from Neeraj Kumar on the police arresting Prashant Kishore. Let's listen in. अफवाह से राजनीति नहीं होती, राजनीति मुद्दों के आधार पर है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया। प्रशासन ने हस्तक्षेप किया तो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी। उनका भरोसा बीपीएससी पर है कि फर्जी आरोप से फर्जी राजनीति की दिशा तय होती है। इसलिए फर्जी राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हुए। प्रशासन को अपना विहित दायित्व पूरा करना चाहिए। Whereas the BPSC Rao has escalated, as we learned from our sources that earlier in the day, the leader Prashant Kishore along with some of the other people who were illegally protesting at the site following the BPSC Rao that has shaken the state was arrested earlier today. In fact, we've also learned from our sources that they were illegally protesting at a site. In fact, the administration had issued orders for them to move to another site, which they did not. Following which they had been arrested. This is the latest we're learning. Bears that Prashant Kishore, the leader of the Jan Suraj Party, and other individuals who were illegally protesting at the site on the BPSC Rao have been detained so far. के पास मौजूद हूं। इसी जगह से पीछे में प्रशांत किशोर को आज सुबह गिरफ्तार किया गया। वो अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे और समर्थक मतलब उनके जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता थे। छात्र बहुत कम थे, 1, 2, 4, 5 छात्र होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ज्यादातर उनके एम्प्लॉइज जन सुराज के, हम लोग 4 दिन से देख रहे थे, जन सुराज के एम्प्लॉइज या जन सुराज के कार्यकर्ता जो उन्होंने संगठन खड़ा किया है, वही लोग इस धरना प्रदर्शन में थे। और इस विरोध प्रदर्शन और आमरण अनशन के जरिए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें वो बुरी तरह एक्सपोज हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि इस बार वो 4 की 4 सीट जीतेंगे और उनको कोई खास जन समर्थन मिला नहीं। तो और इतना ज्यादा धन बल का इस्तेमाल उन्होंने किया है बिहार की राजनीति में, नई बात है। जिस तरीके से साउथ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में पैसे का इस्तेमाल किया जाता है राजनीति में, वो एक नया कल्चर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार अभी भी एक सोबर स्टेट है जहां तक पैसे का उपयोग हो राजनीति में। बहुत कम पैसे में यहाँ चुनाव जीत जाए जाते हैं। आमतौर पर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। और जहां तक कि अभी मैं देख रहा था प्रशांत किशोर के ऑफिस में जिस तरह का धन बल, बाइक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये पैसे आ कहां से रहे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में वो जांच के घेरे में जरूर रहेंगे और इस पर बहुत लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी प्रशांत किशोर की स्थिति ये है कि उन्हें कहीं अज्ञात जगह पर ले गया गया है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि इस गांधी मैदान में जो कि प्रोहिबिटरी एरिया है, यहाँ पर 2 बार FIR हुई और पहली बार
पुलिस ने बेल दे दिया था, दूसरी बार कई बार उनसे आग्रह करने के बावजूद वो जब खाली नहीं किया उन्होंने इस जगह को, तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। समर्थकों को तीतर बीतर किया गया। गांधी मैदान का ये दृश्य देखिए, और ठीक उधर गांधी मूर्ति है और यहाँ पर टेंट बल्ले जो भी लगाए गए थे उनको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है गांधी मैदान में। कुछ ही देर में यहाँ पर जिलाधिकारी भी आने वाले हैं स्थल का मुआयना करने के लिए। पुलिस भी चाक चौबंद है, यहाँ पर घुसने नहीं दिया जा रहा है किसी को। और सबसे बड़ी बात कि अभी उन्हें नौबतपुर की तरफ कहीं अज्ञात थाने में रखा गया है। उसके बाद पुलिस उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। अगर कोर्ट बेल दे देती है तो वो छूट जाएंगे, या नहीं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये बात है, और ये सारा विवाद जो है बीपीएससी एग्जाम्स को लेकर हुआ। री एग्जाम की मांग कर रहे थे छात्र संगठन के कई गुट, और उसमें ज्यादातर कोचिंग माफिया भी इन्वॉल्व थे। और कोचिंग माफिया के सह पे ही बिहार पटना के बापू सभागार में जहां पर एग्जाम हुआ था, 18,000 बच्चों को परीक्षा देने से वंचित करने के लिए सवाल प्रश्न पत्र देर से बांटी गई, जिसके चलते फिर से दोबारा री एग्जाम हुआ। और 5300 बच्चे पिछली बार एग्जाम दिए थे, इस बार 6,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। इसके पहले भी ऐसी प्रेसिडेंट रही है कि जब भी ऐसी कोई गड़बड़ी आई है ये तो री एग्जाम हुए हैं। और बहरहाल जहां तक हम लोग 4 दिन से कवर कर रहे थे, प्रशांत किशोर के रैली में, ये प्रोटेस्ट में छात्र नदारद थे, ज्यादातर उनके एम्प्लॉइज और जन सुराज के कार्यकर्ता ही दिख रहे थे। बैक टू यू। Whereas the latest this morning is that Prashant Kishore, who is the leader of the Jan Suraj party, has been arrested in Patna for sitting on illegal protest site. In fact, the administration had asked them to move, but they had not. Following which, Prashant Kishore, along with other individuals who were protesting at the site, have been arrested. This is what we've learned from our sources on the BPSC row escalating further today. Now, the protest which continued and which sort of wreaked a lot of havoc in the minds of the students who had to retake the examinations, and also raised a lot of questions on the process that was being implemented for these examinations, which can make or break careers. Now, the latest we learn is that Prashant Kishore and some other individuals have been arrested by the police in Patna earlier today. Viewers, let's listen in to what reactions. Viewers, we have reactions coming in of the JDU leader Neeraj Kumar on the police arresting Prashant Kishore. Let's listen in. अफवाह से राजनीति नहीं होती, राजनीति मुद्दों के आधार पर है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया। प्रशासन ने हस्तक्षेप किया तो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे दी। उनका भरोसा बीपीएससी पर है कि फर्जी आरोप से फर्जी राजनीति की दिशा तय होती है। इसलिए फर्जी राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हुए। प्रशासन को अपना विहित दायित्व पूरा करना चाहिए। Whereas I'd like to bring in my colleague Prakash joining us live. Prakash, just help us understand now that Prashant Kishore has been arrested in Patna today again for illegally sitting on the protest site, despite getting decisions to sort of move away from the protesting site that they were at, along with the other individuals who've been arrested. What's the status that is right now on that front? Yes, right. Prashant Kishore has been arrested for repeated violence and offense of sitting in the prohibitory area for the past 4 days, despite repeated requests from the Patna police and the Patna district administration. Now that he was on indefinite fast and hunger strike, the police had no option but to arrest him
and arrest his supporters as well. Now, this is the part of the Gandhi Maidan from where he was arrested early morning, and he's been taken to unknown destination, and we are getting to know that the court, he will be produced in the court, and if the court grants him bail, he will be scotted free. But if the court does not grant him bail, then he might be put in jail as well for repeated violation of entering into the prohibited area. That's the issue. Now, the question is, who were with Prashant Kishore since 4 days? We have been covering for the past 4 days that Prashant Kishore was joined by his supporters, which includes the Jan Suraj Party employees. I repeat, Jan Suraj Party employees as well as the Jan Suraj Party workers. There were negligible presence of the students in the protest, as the students had appeared for the re-exam, showing faith in the BPSC. There was no question paper leak, as it was also said by Prashant Kishore. Now, Prashant Kishore, having failed in the by-elections, in the recent by-elections held in Bihar, he wanted to get a foothold into the political arena of Bihar, having spent large amount of money. This is a new culture that Prashant Kishore wants to create in Bihar by investing in and infusing a lot of money, like it happens in South India or West India. And I will not be surprised if in future it is a new political scandal in the country would be unearthed. We are working on it for sure, and the kind of wealth that is being put in and the resources that is being put in from a newcomer and a rookie like Prashant Kishore, and based on the money he wants to garner supports. So looking at the fact that he was cornered in the by-elections and he wants to get a foothold now, he wants to give a new dimension to the politics in Bihar by joining hands with the students, and that to a certain section of the students. And now that he has been arrested, he wants to gain momentum because Bihar is into the election. Bihar will be into the election mode later this year, likely to be held in October, November. And he wants to get a full foothold. Now, meanwhile, Prashant Kishore has been arrested. He's been taken to unknown destination, and he may be produced in the court. We'll wait and watch what kind of action the police takes. Back to you. Thank you, Prakash, for taking us and giving us an overview really of the whole BPSC row and today's happenings, where Prashant Kishore and some other individuals have been arrested in Patna for sitting on illegal grounds and protesting on the BPSC row.